सबसे पहले हम क्या रखते हैं, गिवन, क्या क्या गिवन, पार्टनर। सबसे पहले आपके पार्टनर पी क्यू एंड आर। इसके बाद आता है कैपिटल 40,000, 30,000 एंड 40। इसके बाद सैलरी क्यू को मिल रही है कितनी, 6,000 एंड आर को मिल रही है 4,000। Interest is allowed on capital, interest on capital. Those are the 300 and 1,000. Interest मालूम नहीं है, क्या सब लोग नहीं करते हैं। प्रॉफिट दे रखा है आपका आफ्टर सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है, $10,000 each। अब एक चीज लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट आपके 10,000 है, वो तो बढ़ जाएंगे उसी के रेशियो में 50%, 30% एंड और बाकी जो बचा हुआ है एंड रिमेनिंग इक्वली, रिमेनिंग क्या लिखा हुआ है, ठीक है। Profit and loss appropriation. For the year ending 31st March 2023, अपन ऐसा मान लो, ठीक है, जैसे कुछ 2015 पार्टनरशिप जो है ना, उसके बाद कैपिटल जो वहाँ पे दे रखा है और सर्विस की हाँ, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका नेट प्रॉफिट, इतना आपका नेट प्रॉफिट 21,000 एड सैलरी एड बैंक क्योंकि इसमें लाइव शब्द लिखी हुई है, अभी भी चलेगा बट मैं जरा वेट करता हूँ, ठीक है। आपका 10,000 ये कितना जाएगा, तो सैलरी क्यू एंड आर,
to interest on P, Q and R. That is 4,000. ठीक है, बाकी कुछ है नहीं सर. Partners capital returns. Show the distribution of capital. तो partners capital. ठीक है. P, Q and R. डिफरेंस अगर हम बात करें तो यहाँ निकल रहा है डिफरेंस आपका 15,500. 16,500. ठीक है. 10,000 के लिए क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा 50%, यहाँ आ जाएगा 30% और यहाँ भी आ जाएगा आपका 20%. 5,000, 3,000 and 2,000. अब बचे हैं one third and 2,167. 2,167 and 2,166. ठीक है, क्लियर है. ये रहेगा आपका 5,217, 7,167, 5,167 and 4,166. टोटल आ गया आपकी यहाँ पे कितनी 31,000. यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, इसको बताओ. ये देखो 65 को मुझे इक्वली बांटा गया, कितने बांटा है अंदर के नंबर देखो. ठीक है, बैलेंस भी क्या है बताओ. 1,500 nice salary. 6 ये ना प्रोग्राम उसका ड्राइंग कैसे करें.
6 7 7 6 7 हाँ 5 6 7 4 6 6 ठीक है ठीक है ये